जय जिनेन्द्र जी, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको श्री कल्याण मंदिर स्तोत्र सुनाने जा रही हूँ। कल्याण मंदिर मुदारम वद्य भेदी भीताभिप्रदमनिंदित मिंघ्रि पद्मम संसार सागर निमज्जदशेष जंतु पोतायमान विनम्य जिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सुर गुरुर्गरिमाम्बुराशेः स्तोत्रम सुविस्तृतमतिरन विभुर्विधातुम तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतोस्तस्यामेष्किल संस्तवन करिष्ये सामान्यतपि तव वर्ण्यतु स्वरूपमस्मादृशाः कथमधीश भवन्त्यधीशाः दृष्टोऽपि कौशिक शिशुर्यदि वादिवान्धो रूप प्रोरूपायति किंकिल धर्मरश्मेः मोहक्षयादनुभावन्नपि नाथ मर्यो नून गुणान् गण्यतु न तव क्षमेत् कल्पान्त्वान्तपयसः प्रकटोऽपि यस्मान् मीयेत् केन जलधिरेणु रत्नराशय अभ्यूयतोऽस्मि तव नाथ जदाशयोऽपि कर्तुस्तव लसत्संख्या गुणाकरस्य बाल्पी किन्ना निजबाहुयुग वितत्य विस्तीर्णता कथयति स्वधियाम्बुराशेः ये योगिनांपि न यान्ति गुणास्तवेश वक्तुं कथ भवति तेषु ममावकाशः जाता तदेवमस्मीक्षित कारितेयं जल्पन्ति वा निजगिरा अनुपक्षिन्पि आस्तांचिन्त्य महिमा जिन संस्तवस्ते नामापि पाति भावतो जगन्ति तीव्रतपोपहत पान्थजनान् निदाधे प्रीणाति पद्मसरसा सरसो निलोपि हृद्वर्तिनी त्वयि विभो शिथिलीभवन्ति जनता क्षणेन निविदा अपि कर्मबन्धाः सद्यो भुजगम्या इव मध्यभागमभ्यागते वंशिखण्डिनी चन्दनस्य मुच्यन्तेव मनुजाः सहसा जिनेन्द्र रौद्रैरुपद्रवशतस्त्वयि वीक्षितेऽपि गोस्वामिनी स्फुरिततेजसि दृष्टमात्रे चोररिवाशु पश्वाः प्रप्लायमानाः त्वं तारको जिन कथ भाविना ताएव त्वमुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्तः यद्वा धृतिस्तरति यज्जलमेष नून मन्तर्गतस्यामृताः सकिलानुभावाः यस्मिन्ह प्रभृत्योऽपि हतप्रभावाः सोऽपि त्वया रतिपते क्षपिताः क्षणेन विव्यापिता हुद्भुजः पयसाथ्येन पीतं न किं तदपि दुधर्वाढ्वेन स्वामिन्नन गरिमानम्पि प्रपन्नास् त्वा जनतावाल कथमहो हृदये दधानाः जन्मोद्धि लघुतरन्त्यतिलाघवन् चिन्त्यो न हन्त महता यदि वा प्रभावाः क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथम निरस्तो ध्वस्तास्त्रा बत्कथ किल कर्मचौराः प्लोषत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोकै नीलगुमानि विपिनानि न किन्हिमानि त्वा योगिनो जिन सदा परमात्मरूप मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुजकोशदेशे पूतस्य निर्मलरुचेर्यदि वा किमन्या दक्षस्य सम्भावी पदमनुकर्णिकायाः ध्यानाजिनेश भावतो भाविनः क्षणेन देह विहाय परमात्मदशा व्रजन्ति तीव्रानलदुपलभावं पास्य लोकै चामीकरत्वमचिरादिव धातु भेदाः अन्तः सदैव जिन यस्य विभाव्यसे त्वं भल्यः कथ तदपि नाशयसे शरीरम् एतद्रस्वरूपमथ मध्यविवर्तिनो हि यद्विग्राह प्रश्मयन्ति महानुभावाः आत्मा मनीषिभिरायं त्वद्भेदबुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवतीह भवत्प्रभावः पानीयमध्यमृतमित्यनुचिन्त्यमान् किन्नाम्नो विश्विकाराम्पाकरोति त्वामेव विततं सम्पर्वादिनोऽपि नून विभो हरिहरादिधिया प्रपन्नाः किं काचकाम्लिभिरीशसिक्पि शङ्खो नो गृह्यते विविध वर्णविपर्ययेन धर्मोपदेशसमये सविधानुभावादास्ता जनो भवति ते तरुरप्यशोकाः अभ्युक्ते दिनपतो समहिरुहपि किन्वा विवोधमुप्याति न जीवलोकाः चित्रं विभो कथं वाड्मुखवृन्तमेव विश्वाक्पतत्य विलासोर्पुष्पवृष्टयः त्वद्गोचरे सुमनसा यदि वा मुनीश गच्छन्ति नून्मदैव हे बन्धनानि स्थाने गभीरहृदयोदधि सम्भवायाः पीयूषता तव गिराः समुदीरयन्ति पित्वा यतः परमसम्मदसङ्गभाजो भव्या व्रजन्ति तरसाप्यज्राम्रत्वम् स्वामिन् सुदूरं वनम्य समुत्पतन्तो मन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामरोघाः येस्मे न त विद्धते मुनिपुङ्गवाया ते नुनमूर्ध्वगतयः खलु शुद्धभावाः श्यामा गभीर गिर्मुज्जवलहिम्रल सिंहंसंस्थमेह भव्य शिखण्डिनस्त्वाम् आलोकायन्ति रभसेन नदन्तमुच्चैश्चामीकराद्विशीर्षेव नवाम्बोहम् उद्गच्छता तव क्षितिद्युतिमण्डिलेन लोपमच्छविरशो कत्रूर बभूव सानिध्यत्पि यदि वा तव वीतराग निरागता व्रजति को न सचेतनोऽपि भो भव प्रमादं वधूए भजध्वमेन मागत्य निर्वृतिपुरी प्रति सार्थवाहम् यनिवेदयति देव जगत्त्रयाय मन्ये नदन्न भिन्नः सुरादुन्दुभिस्ते उद्घोटितेषु भावता भुवनेषु नाथ तारान्वितो विधुरयं विहिताधिकाराः
मुक्ताकलाप कलितोल्लसितात्पत्र व्याजात त्रिधा धृतत्नुर्ध्रुवम्युपेतः स्वेन प्रपुरित जगत्त्रय पिंडितेन कांति प्रताप यश सामिव संचेन माणिक्य हेम रजत प्रविनिर्मितेन साल त्रयेन भगवन अभितो विभासी दिव्यस्त्रजो जिन नमस्त्रिदशाधिपाना मुत्सृज्या रत्नर्चितान्पि मौलिबंधान पादौ श्रयन्ति भावतो यदि वापरत्र त्वत्संग में सुमनसो न रमन्दैव त्वनाथ जन्मज्जलघेर विप्राड्मुखोऽपि यत्तारयस्य सुमतो निजपृष्ठाल्ज्ञान युक्तम हि पार्थिव निपस्य सतस्तवेव चित्रम विभो यदसि कर्म विपाकशून्यः विश्वेश्वरोऽपि जनपालक दुर्गतस्त्वं किन्वाक्षर प्रकृतिर्प्यलिपिस्त्वमोष अज्ञानवत्यपि सदैव कथञ्चिदेव ज्ञान त्वयि स्फुरति विश्वविकासहेतु प्राग्भार संभृत नभांसि रजांसि रोषादुत्थापितानि कमठेन शठेन यानि छायापि तैस्तव न नाथ हता हताशो ग्रस्तस्त्वमिभिरायमेव पर दुरात्मा यद गर्ज दूर्जित घनौघमदन भीम वृष्यत तदिन्मुसलमंसल घोरधारम दैत्येन मुक्तमथ दुस्तरवारी दधे तेनेव तस्य जिन दुस्तरवारि कृत्यम ध्वस्तोर्ध्वकेश विकृताकृति मर्त्यमुंड प्रालम हृद भयद वक्त्र विनिर्यदग्नेह प्रेतव्रजा प्रतिभावन्तं पीड़ितोया सोस्या भवत प्रतिभाव भाव दुख हेतु धन्यास्तैव भुवनाधिप ये त्रिसन्ध्यमाराध्यन्ति विधिव द्विधुतान्यकृत्याः भक्त्योल्लसत्पुलक पक्ष्मल देहदेशाः पादद्वयं तव विभो भुवि जन्मभाजः अस्मिन्नपार भावावारिनिधौ मुनीश मन्ये न मे श्रवण गोचरता गतोऽसि आकर्णिते तु तव गोत्रपवित्रमिन्त्रे किन्वा विपद्विषधरि सविद्ध समेति जन्मान्तरेऽपि तव पादुग्र न देव मन्ये मया महितमिहितदान दक्षम तेने जन्मनि मुनीश पराभवाना जातो निकेतन्मः मथिताशयानाम् नून न मोहतिमिरावृतलोचनेन पूर्व विभो सकृद्भि प्रविलोकितोऽसि मर्माविधो विधुरायन्ति हेमाम्नर्थाः प्रोद्यत प्रबन्ध गतायः कथामन्यथैते आकर्णितपि महितपि निरीक्षतपि नून न चेतसि मया विधृतोऽसि भक्त्या जातोऽस्मि तेन जन बान्धव दुःखपात्रं यस्मात् क्रियाः प्रतिफलन्ति न भावशून्याः त्वं नाथ दुखी जन वत्सल हे शरण्य कारुण्य पुण्यवस्ते वशिना वरेण्य भक्त्या नते मयि महेश दया विधाया दुःखकुरोदलन तत्परता विधेहि निसंख्यसार्शन शरण शरण्यामासाद्या सादित्रिपु प्रथितावदातम् त्वत्पाद पंकजाम्पि प्रणिधान वन्ध्यो वध्योऽस्मि चेद भुवन पावन हा हतोऽस्मि देवेन्द्रवन्द विदिताखिलवस्तुसार संसार तारक विभो भुवनाधिनाथ त्रायस्देव करुणाहृद मा पुनिः सीदन्तमद्य भायद व्यसनाम्बुराशेः यद्यस्ति नाथ भवदङ्घ्रस्रोरुहाणा भक्ते फलकिम्पि सन्तति सञ्चितायाः तन्मे त्वदेक्षणस्य शरण्या भूयाः स्वामी त्वमेव भुवनेत्र भावान्तरेऽपि इत्थ समाहित धियो विधिविज्जिनेन्द्र सान्द्रोल्लसत्पुलक कञ्चुकिताङ्गभागाः त्वद्बिम्बनिर्मलमुखाम्बुजबधलेक्ष्या ये संस्तवताव विभो रचयन्ति भव्याः जन नयन कुमुद चंद्र प्रभास्वरा स्वर्ग संपदो भुक्त्वा ते विगलित मलनिचया अचिरान्मोक्ष प्रपद्यन्ते धन्यवाद।